Hello my dear viewers, welcome you all to Scorpio class Hindi. I hope you all are doing good. If you are a student of class 8 and watching this video for the first time, then let me tell you that in this channel you will also get class 9th and 10th explanation and notes. So it's going to be helpful in your coming years. In this video, I have brought complete notes of chapter Samachar Patra Ki Atmakatha. Explanation of the same I have already uploaded. You can take the link from the description box. So now let us see the first main. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. आंसर इन वन सेंटेंसेस. फर्स्ट क्वेश्चन. किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए. नेम एनी टू न्यूज़पेपर्स. आंसर हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया. You can write any name like Deccan Herald, then Times of India, Hindustan Times, Navbharat Times, any name you can write of your own choice. Okay. Then second one is हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है. Which is the first Hindi newspaper? Answer हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मारथाड़ है. The first Hindi newspaper is उदंत मारथाड़. देन प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे. इन एंशियंट टाइम्स हाउ डिड राजा महाराजा यूज टू सेंड मैसेजेस. आंसर प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों और संदेश वाहकों के द्वारा संदेश भेजते थे. So in olden times, Raja Maharaja used to send messages by pigeons and messengers, like someone who used to carry message from one place to another, that is postman. Okay, they are known as Sandesh Vahako. Then next, समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से हैं. What are the new ways of getting news? आंसर समाचार पहुंचाने के नवीन साधन है रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि. सो द न्यू वेज ऑफ गेटिंग न्यूज आर रेडियो, टेलीफोन, टीवी, कंप्यूटर एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट, कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है. विच इज द फर्स्ट कन्नड़ा न्यूज़पेपर. आंसर कन्नड़ का पहला समाचार पत्र मंगलुरु समाचार है. The first Kannada newspaper is Mangaluru Samachar. Then next main is दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए. आंसर इन 2 to 3 sentences. फर्स्ट क्वेश्चन इज आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयार कीजिए. You have to prepare a list of Kannada, English and Hindi daily newspaper that are commonly used today. आंसर आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची है. नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता, लोकसत्ता आदि. So here the list of newspapers that are commonly used today in languages like Kannada, Hindi, English are Navbharat Times, Hindustan Times, Times of India, Deccan Herald, Indian Express, Amar Ujala, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता, लोकसत्ता etc. You name it and we have it. Yes or no? Then next question is समाचार पत्रों में कौन कौन से विषय होते हैं. What are the topics we get to see in newspaper? Answer समाचार पत्रों में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है. खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है. कार्टून, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि की भी जानकारी मिलती है. आजकल बड़े बड़े लेखकों की जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक,
कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती है। कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी किसानों को मिलती है। इसके अलावा वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। So newspaper contains lot of useful information. We get to know about the events that happen all over the world, be it sports, movies, weather report, job advertisement, market price, agricultural information, marriage advertisement, exam timetable, result, etc. Nowadays, we also get to see famous writers' story, achievements, etc. Whenever any new technology is launched, we get to know about it. Yes or no? So it gives each and every information of big and small matters. It has become an integral part of our daily life. It has become an important part of our daily life. Okay? Now, next main is समझिए और लिखिए. This you have to understand and write. See, first is Doordarshan. Dur plus darshan. Dur means far and darshan means to see. So what you can see from far, that is television. You can see in television far off places, that is television. Then second is Dur Bhasha. Dur plus Bhasha. Dur means far and Bhasha means language. So what it is that you speak from far? It is telephone. You speak from telephone. Then third one, Dur Sanchar. Dur means far and Sanchar means communication. So that is telecommunication. Then next main is सही शब्द चुनकर लिखिए. Choose the right answer. First one, रेडियो से समाचार सुन सकते हैं. You can listen news from radio. Next, दूरदर्शन में हम समाचार पढ़ और सुन सकते हैं. We can listen and read news from television. Then, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं. We can read newspaper. Then next main is सही या गलत का चिन्ह लगाइए. Here you have to put a right tick and a wrong tick according to the sentence. First one, समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है. It is false. It is wrong. It means that newspaper is an expensive source of knowledge. No, it is not expensive. Why? Because it is a cheap source of knowledge. It is not an expensive. वो महंगा नहीं है बल्कि सस्ता साधन है. Then next, प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे. In olden days, messages were sent through pigeons. Yes, correct it is, because at that time telephones were not there. Then next, रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं. We can read news from radio. False. Wrong. We cannot read from radio. We can only listen from radio. Then next is रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है. By reading newspaper, our knowledge increases daily. Yes, it is correct. Because we get to know information about everything. Whatever new thing arrives, everything we come to know by reading newspaper. That increases our knowledge. Then next main is दोनों खंडों को जोड़कर नए शब्द बनाइए. Here you have to join words and make new words. See, here some words are given and in middle van is given. So you have to add Satya plus van. Satyavan. Gun plus van. Gunvan. Bal plus van. Balwan. Daya plus van. Dayavan. So after joining these two words, you get a new word that you have to write. Then next main is मैं कौन. This is a puzzle. घर में हो तो कली, बाहर हो तो खिली. What it is? It is umbrella, छतरी. Then next, दाना दुनका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ. शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता हूँ. क्या है वो? कबूतर, pigeon. Okay?
Now the next one is vilom shabd. Vilom shabd means opposite words. Amir, garib, rich, poor. अंदर बाहर, inside outside. जीना मरना, to live to die. ज्ञान अज्ञान, knowledge ignorance. सस्ता महंगा, cheap expensive. एक अनेक, one several. सरल कठिन, easy difficult. देन नेक्स्ट मीन इज नमूने के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य लिखिए. हियर यू हैव टू फ्रेम 2 sentences with different meaning. See, for example, दो is given. You have to frame 2 sentences. This is an example. Already it is given. रिया के पास 2 रुपए है. See, this दो means 2. Okay, in numbers we say 2, that. And in second sentence, प्रिया को किताब दो. That दो means to give. So first sentence means रिया has 2 rupees. रिया के पास 2 रुपये है. And the second sentence is give the book to प्रिया. प्रिया को किताब दो. ठीक है. तो फिर नेक्स्ट वाला है कल. कल means see, one meaning is yesterday and the second meaning is tomorrow. So you have to frame 2 sentences. One sentence should speak about yesterday and the other sentence should speak about tomorrow. मैं कल बेंगलुरु से आया. I came from Bangalore yesterday. एक कल हो गया. अब दूसरे कल का सेंटेंस बनाना है. मीना कल खेलने नहीं आएगी. मीना will not come to play tomorrow. See, in one sentence yesterday is used, in other sentence tomorrow is used. Okay. Then next word is mat. Mat means do not or don't. तो पहला सेंटेंस अधिक भोजन मत खाओ. Do not eat too much food. And second sentence, बच्चों शोर मत मचाओ. Kids don't make noise. Okay. Then next word is par. One per means on, on, on. And second meaning is feather. So here the first sentence is कुर्सी पर बैठ जाओ. Sit on the chair. On, on. Okay. Second वाला कबूतरों के पर खूबसूरत लगते हैं. Feathers of pigeon looks beautiful. So both the meaning is used here. Okay. So like this way you have to frame any sentence of your choice. You can frame it. Then next main is चित्र देखकर उनके 2 शब्द लिखिए. You have to see the picture and write 2 names of it. See here, picture is given. This is newspaper. समाचार पत्र अखबार. We can also say समाचार पत्र. We can also say अखबार. It means newspaper. And second picture is flower. फूल सुमन. Okay. तीसरा पिक्चर है होम घर मकान ग्रह. Anything you can write. चौथा है सूरज सूर्य सन. फिर लास्ट पिक्चर है ट्री पेड़ झाड़ वृक्ष. ठीक है. तो कोई भी 2 शब्द लिखना है. देन नेक्स्ट मेन इज सही वर्तनी वाली शब्द लिखिए. वर्तनी वाली मीन्स हियर 2 words are given. You have to see which word has the right spelling. Okay. One is wrong and one is right. You have to see which word is having the correct spelling that you have to write. See, masti masti. So here the right one is masti. You have to see the spelling here. Then seek. Then sasta. Vishwa. Okay. So here we have done with all the mains, question answers, all the objectives. I hope I have provided satisfactory answer. You found it useful. If you like this video and if you want more such videos, then hit the like button, share and subscribe my channel. Thank you. Till then, take care.